Hi, bro. How are you? क्या हाल चाल है भाई? So, test match.
Hi guys, so let's start some questions about कुछ देखते हैं कि टॉप डिमांडिंग स्किल्स इन 2025. सो लेट्स डिस्कस अबाउट 5 ऐसे स्किल्स है जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होने वाला है, तो उस स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. टॉप 5 डिमांडिंग स्किल्स इन फ्यूचर. सो द पहला स्किल की बात करें तो एआई एंड बिग डेटा एंड टेक्नोलॉजी है. एआई का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है. काफ़ी इंडस्ट्रीज़ एआई अडॉप्ट कर चुका है, काफ़ी इंडस्ट्री मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट थिंग है जो सबसे ज़्यादा हायरिंग होने वाला है वो साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है आने वाले समय में. तो साइबर सिक्योरिटी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको जॉब लगने का. तो साइबर सिक्योरिटी में आपको लिनक्स है, आपका नेटवर्किंग है, ठीक है, बेसिक्स क्लाउड आना चाहिए, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग्स है, ये सब काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में डिमांड है. ठीक है, और नेक्स्ट थिंग आता है मशीन लर्निंग. यूआई का भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है आने वाले समय में. और सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और हमेशा रहता है इनका डिमांड, वेब डेवलपमेंट का. तो वो चीज़ है. डेटा एनालिसिस का जॉब काफ़ी ज़्यादा होने वाला है. काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हायरिंग भी कर रही है, काफ़ी हायरिंग भी हो रहा है. डिपेंड करता है आप कौन सा स्किल सीख रहे हो. डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, तो बहुत सारे प्रोफाइल हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी काफ़ी ज़्यादा जॉब होने वाला है. यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन का भी काफ़ी ज़्यादा है. तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो. वेयर टू स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग. सो क्लाउड कंप्यूटिंग कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, या डेवऑप्स आपको सीखना है तो कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या रोड मैप होगा, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ाई करना पड़ेगा, वो सब आज इस वीडियो में देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई क्या रोड मैप होने वाला है. अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाह रहे हो तो क्या क्या चीज़ें मुझे सीखना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा. सो लेट्स से कि अगर आपको क्लाउड इंजीनियरिंग में जाना है तो बेसिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आनी चाहिए. ठीक है, बेसिक्स यानी कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें. फिर क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ना है. मॉडल्स कैसे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए. फ्री रिसोर्सेज आप कहाँ से सीख सकते हो? बेस्ट है कि यूट्यूब से आप सीख सकते हो. सिंपली लर्न है, फ्री कोड कैंप है, अभिषेक विरामला का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो. अब कौन सा क्लाउड आप पिकअप करो. सेकंड नंबर पे आता है बेसिक्स. आपका क्लियर हो गया कि क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स कैसे काम करता है. फिर आप चूज़ करो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज़ कर सकते हो. AWS काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, एज्योर भी है, तो AWS पे जाते हैं. तो AWS का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है. तो आपको कुछ सर्विसेज बेसिक्स कंसेप्ट आने चाहिए AWS का, जैसे EC2 है, S3 है, स्टोरेज के लिए, नेटवर्किंग के लिए VPC, लोड बैलेंसिंग यूज़ होता है, डेटाबेस, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, सर्वरलेस, लैम्डा वगैरह यूज़ होता है मॉनिटरिंग के लिए, क्लाउड वॉच, ये सब. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट थिंग आता है, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग सीखने से पहले आपको बेसिक्स लिनक्स, नेटवर्किंग एंड बेसिक लिनक्स, नेटवर्किंग, ठीक है, और आपको
ये सब आनी चाहिए। लिनक्स है, नेटवर्किंग है, ठीक है। उसके बाद आप क्लाउड पे मूव करो। क्लाउड पे आप सीखो ए डब्ल्यू एस कहाँ से सीखना है बेसिकली आप जा सकते हो अभिषेक विरामला तो यूट्यूब चैनल में, वहाँ से आप ए का भरा पड़ा कंटेंट है, वहाँ पे आप सीख सकते हो। कुछ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे कि ए क्लाउड प्रैक्टिशनर है, ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। फिर आप सर्टिफिकेशन वगैरह करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, गिटहब पे अपलोड करो, फिर पोर्टफोलियो बनाओ। ये सारे चीज़ करने के बाद फिर लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करो, तो वहाँ से आपको जॉब लगने के चांसेस रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ए डब्ल्यू एस क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है आपका, अभिषेक विरामल्ला है, ठीक है। और भी बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। टेक्निकल गुफ्तगू है, वो हिंदी में पढ़ाता है, वहाँ से आप सीख सकते हो।
Yeah, so let's start. So roadmap of DevOps engineer. Let me explain because I'm working last 5 years as a DevOps or as a DevOps engineer or a cloud engineer, we can say. So let us start and break down the things how you can become. So let's, if you have a query, please, I think, please ping your, I mean, in your comment. So let me pick up your query. So if you have a query, please like add your question or add your opinion in comment. Let me pick up one by one. So so let's start the DevOps. How you can become a DevOps engineer? Agar if you are a beginner or if you want to learn DevOps, then what are the skill set you need to require to become a DevOps engineer? So first thing you have to do, be a master in Linux, Unix, or whatever. Basic fundamentals like how to create directories and how actually copying the files, FTP, SCP, and a lot of things like the Linux, like how to mount the directories, like how to create the directories, how to give the permission, all the things you have to master in Linux. And the second one is you have to be a practical knowledge of networking, like how actually data transfer from one system to another, how like IP subnetting work, how like gateways work. So that's so that's you have a strong knowledge of networking, like what is Ethernet, how actually Ethernet work, what is firewall, and all the things you have to keep in mind. So the first thing is Linux, you have to master in Linux, and the second one is networking, how actually networking work, what is port, what is FTP, SCP. So networking is very important, and you have to be like basic fundamental of security related like networking concept. So the third one is you have to pick up like cloud platform like AWS, Azure. According to you, you can choose. So the market is captured AWS, so you have to go with AWS because AWS is like everywhere. So every most of the companies are using AWS, so you have to go to that AWS. So the the fourth one is you have to be master on like scripting language, like no, scripting language means you have to knowledge of scripting, how you have write a script, like you have to you can use like bash or the Python, depend on choice. And the next thing is Git. So Git uh, knowledge is compulsory if you are coming in DevOps or if you are coming in cloud. Git and the GitHub, it's a public repository, you can learn both of them. So next thing is CI/CD pipeline. So you can go with CI/CD pipeline. So let me give me one YouTube channel, so you can like go with that. Let me give you one YouTube channel idea. So the YouTube channel is M Prasant. You can follow that. So all the things like networking, Linux, and all the things is mentioned here in the playlist. So you have to go to that and learn from them, Linux basics and the networking parts, and as well as there have like AWS tutorials, Jenkins, CI/CD pipeline. So a lot of things are in there, so you can go with that. So I'm pinging like uh, her channel. So let me give a moment. I'm pasting for DevOps and Prasant YouTube.
Linux, networking, and all the things. Networking, AWS, or Abhishek Veera Malla for DevOps, or you can go with technical good to go. This channel is enough to be a master in DevOps. If you want to go with DevOps or a cloud engineer, so these are the YouTube channel. You can go with that. So now coming to the topic, so you have to be a knowledge of Kubernetes, Docker, and the Kubernetes, how actually Docker work and how we can containerize the application. This thing is very important. You have to be knowledge about monitoring and logging tools like Prometheus, Grafana. These tools are very important. While if everything are in there in this, I have mentioned in this YouTube channel, so you can learn from them. So these things are enough for a DevOps engineer. So if you have a question, so you can write here. Mhm. Okay, welcome. So if you are a beginner, please subscribe my YouTube channel and like. So let's have a quick questions about, if you have a quick questions, so you can ask me. So let me discuss about that. So if you have any query related to the IT career or a software industry, we can discuss. So if you have a question, so please ping a comment or ask any questions related to the software industries or an IT industries. So if you have any query, please
add your questions in a comment. So what you need to learn? uh, yeah, it's very competitive, but if you have a like if you have a it is very difficult to competitive to get a job in IT in India. Not much difficult as if, yeah, it's a fresher for it is difficult for fresher, but if you have a solid understanding about the tools, about the technology, then you will definitely hire for anyone one of the company. So it doesn't matter, like if you are going to apply firstly, then it will face lot of lot of problems like rejected rejection. So after that you will definitely get a good job, good package. If you have a consistency, if you have do some projects, make a portfolio on that. If you want to become a DevOps or the cloud or the web developer, anything, so portfolio and the projects, and you have to be active on LinkedIn and share whatever you have developed. You have to share whatever you have developed. Just share the make a videos and share a link of GitHub and paste on the LinkedIn. So it is very like not easy to get a job, but if you are really trying to get a job, then definitely you will definitely get a job. So nothing is difficult. So any it's so your query is, have you get my answer? So let's, I don't have any formal schooling but work in IT already. Is it better to get some uh, accreditation? Get some accreditation. What's mean? Accreditation. Yeah, sure. So you have like uh, you have a patience. You have uh, like you are like hardworking. Then definitely you will definitely get a job and better salary. So depend on you.
So as far as cloud software goes, what is the most commonly used there? Cloud software goes. As far as cloud software goes. So what are the questions like as far as a cloud software goes? Cloud software goes means what? So what you want? Like, can you elaborate your questions? Then I will definitely give you answer. Okay, so you mentioned Azure, we deal with mostly Microsoft here, but you mentioned another one that I am unfamiliar with. Okay, so it's not like so it's Azure is absolutely a cloud platform, so you can go with Azure, you can learn with them, so you can learn from YouTube channel. Start here. So it doesn't mean like you can start. So if you are like if you are becoming or a cloud engineer or DevOps engineer, so most of the application are on cloud, they are using cloud. So you if you have a familiar with that, then it will easy for you. So you are so let's if you have any queries or questions, so let me pick up one by one.
Yeah, every industries have like you every industry have provide like trainings and mentors. You can go with that, and if you have like free resources, you can go with YouTube channel. Depending on that. So if you have any queries, like, so if you are the one thing I have learned from past few years, the thing is you have like curiosity of learning is very important. So you have learning attitude, then you will definitely achieve whatever you want. That's the thing. Okay, no issue. You are welcome, bro. So let's, if you have a query, you can ask me anything. अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी. सो इट्स